is how to create, wealth creation through wealth baskets. Now I've got a lot of people who say, okay, wealth baskets kya hai, samajh mein aa gaya, wealth baskets le bhi li ya nahi bhi li, ya they are planning to take, but how does this fit in the overall schema of things? When I say overall schema, one thing that comes in my mind is asset allocation, right? So in order to kind of get on this topic as to finally how the things are coming in place and वो puzzle में jigsaw puzzles की तरह कैसे चीजें ऐड हो रही हैं, आज वो कवर करेंगे इस एपिसोड में. So let me share my screen with you and also tell you that I'll also cover what is Wealth Baskets in 5 minutes for people who are actually kind of who are new, who might not have who might have missed attending this session in the past few episodes. So basically, guys, Wealth Basket in the collaboration with Paytm Money, what we have got is these are curation of stocks. कैसे सोचना है इसको? रिटेल इन्वेस्टर के पास देयर आर टू वेज टू गेट इनटू इक्विटी मार्केट्स. या तो वो डायरेक्टली स्टॉक्स परचेज करे कि आज किसी ने बोल दिया कि इन्फोसिस ले लो, किसी ने बोल दिया रिलायंस ले लो, ले लिया, बट देन उसको लेने के बाद एंट्री कर ली, अभी एग्जिट कैसे करना है? बिकॉज एग्जिट इज इंपॉर्टेंट. सी, देयर इज अ स्ट्रेटजी कॉल्ड अ बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी, where you get into a stock and keep holding for years and years and years, right? वो स्टॉक कभी बेचने वाले नहीं होते, which is good. बट बिकॉज इक्विटी मार्केट्स इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, वो ये नहीं है जो पिछले 1.5 साल से चल रहा है कि बस एक ही डायरेक्शन में भागता रहेगा, ऐसा नहीं होगा. वो द लॉन्ग टर्म देयर विल बी लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स, बिकॉज उसका काम, आप अगर लाइन प्लॉट करो तो वैसे तो स्ट्रेट लाइन प्लॉट होगी, बट आइडियल मूवमेंट ऐसे ऐसे होगा. जब मार्केट नीचे जाता है तो देयर इज अ पैनिक इन पीपल्स माइंड एज टू व्हाट शुड वी डू नाउ, बिकॉज जिसने आपको कॉल्स दिया होगा ही वुड बी गायब, सो यू वुड नॉट फाइंड हिम कि व्हेन इज ही गिविंग द एग्जिट कॉल्स एंड ऑल. अभी रिलायंस ले लिया 2000 पे, नाउ इट इज एट 2500. शुड यू एग्जिट? मे बी इट करेक्ट्स डाउन टू 2100 अगेन एंड यू विल से कि वो यार 2500 पे बेच दिया होता तो अच्छा था, प्रॉफिट बुक कर लिया होता. सो बिकॉज यू डू नॉट हैव द स्किल सेट एंड द टाइम, इसमें दोनों चीजों की जरूरत है. स्किल सेट भी चाहिए, टाइम भी चाहिए. आपके पास टाइम है बट स्किल नहीं है, फेल. आपके पास स्किल है बट टाइम नहीं है, अगेन फेल, बिकॉज मार्केट आज तो 9:15 to 3:30 होंगे. In that case, what the option with the retail investor is to get into a mutual fund. I mean, mutual fund have been around for like 2-3 decades now, and it's a pretty wonderful asset class. And I have been telling everybody, at least till the time WealthDesk came up with Wealth Baskets, that definitely go invest into equities through mutual funds, because you get a lot of variety. But then there are certain drawbacks of mutual funds, which we'll discuss in this session, which was mainly the topic which we covered last week. Now, what happens is that in that case, in order to overcome your drawbacks of mutual funds, we have something called wealth baskets. Now, wealth baskets are curated portfolios by the SEBI registered, SEBI licensed professionals. So we know that, okay, if पैसा उनके हाथ में है तो सुरक्षित है, तो ठीक है. And these guys will be, kind of time to time will be giving you exit calls also. एंड दिस कॉल्स विल बी नॉट लाइक कि आपको कॉल आएगा कि आप आज इसको भेज दीजिए, ऐसा नहीं होगा. आपके पास ईमेल नोटिफिकेशन आएगा, एसएमएस नोटिफिकेशन आएगा कि योर SEBI registered professional has actually triggered a rebalancing. Go to the platform and click OK. तो you have to come log into Paytm Money platform and click OK. and आपके जितने भी उन्होंने सेल करने को बोला होगा वो सेल हो जाएंगे, बाय करने को बोला होगा, बिकॉज फ्रेश बाइंग चलती रहेगी. कुछ सेल कर रहे हैं तो कुछ बाय भी होगा. Now you will say मार्केट पूरा नीचे जा रहा है, सारे स्टॉक्स नीचे जा रहे हैं, बट हर मार्केट डाउनफॉल में देयर आर सर्टेन सेक्टर्स जो चलेंगे ही चलेंगे. मार्च 2020 हटा देते हैं, उसके बाद क्या हुआ? अप्रैल, मई, जून, pharma stocks were running, right? धीरे धीरे specialty chemicals came into the picture, then IT came into the picture in August September, और उसके बाद basic material, cement, metal mining. तो हर डाउनफॉल पे हर टाइम देयर आर फ्यू सेक्टर्स which will improve. आज की डेट में तो सब चल रहा है, right? But then there would be 1 or 2 sectors जो नहीं चल रहे होंगे इस टाइम, because correlation of different sectors is different. So this portfolio will be giving you timely exits and entries, which is called rebalancing, which you need to go to the platform and confirm. आप बस उसको कंफर्म करते जाओ, पोर्टफोलियो कैसा चल रहा है, लीव इट इनटू द हैंड्स ऑफ द प्रोफेशनल, एंड not like in 1 month, 2 month, 3 month, but at least give them a 6 to 12 months to see have you outperformed or not, because the historical data, historical testing, and जब से ये portfolio चल रहा है on the other platforms, the portfolios have been outperforming a lot, but outperforming the benchmark, and benchmark here is Nifty 500. Anyways, coming to that, so I have already explained you what happens over here in the slide, what it is given.
ग्रीन में जो वो लिखा है डायरेक्टली क्रेडिटेड इन रिटेल इन्वेस्टर्स डीमैट अकाउंट, दिस इज वन थिंग विच इज डिफरेंट फ्रॉम म्यूचुअल फंड. म्यूचुअल फंड आप लेते हो आपको यूनिट्स मिलते हैं. आप म्यूचुअल फंड भी 1,000 रुपए से 5,000 रुपए से शुरू कर सकते हो. यू गेट अ 50-60 नेम्स कंपनीज बेसिकली, जो आपको कभी पता भी नहीं होगा कि कितनी कंपनी. आपको पता है आपके जो आपने म्यूचुअल फंड लिया उसमें कितनी कंपनीज होंगी आज, कोई भी एक स्कीम में नहीं पता होगा. बिकॉज इफ यू मेक एन एफर्ट यू विल फाइंड इट आउट. बट वो एफर्ट कौन डाले, राइट? सो अपना वी आर लुकिंग दीज डेज कि हम लोग फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं. यू सी लॉट ऑफ people becoming influencers and writing on Twitter, LinkedIn, blah blah, a lot of these places. That the idea for few of them is to really inculcate financial literacy in people like me. So this is my objective. So what I say is कि बस आपको पता तो होना चाहिए आप क्या होल्ड कर रहे हो. वेल्थ बास्केट्स में क्या है कि आप जब ओके करोगे, आई मीन व्हेन यू गो टू द पेटीएम मनी एंड टेक द सब्सक्रिप्शन ब्ला ब्ला लॉट ऑफ दीस थिंग्स, सो ऑल द स्टॉक्स इमीडिएटली कम एंड रिसाइड इनटू योर डीमैट अकाउंट. तो आप देख सकते हो कि मुझे ये 10 स्टॉक मिले आज. ये 10 मैंने अगर 10,000 रुपए लगाया है तो ये 10 स्टॉक जिसमें से एक मिला 1,500 का, एक मिला 500 का, एक मिला 700 का, पूरा डिटेल रहता है कितने स्टॉक्स मिले, राइट? एंड आप उसका डेली की डेली आप उसका परफॉर्मेंस मेजर कर सकते हो. म्यूचुअल फंड्स में क्या है, आप डेली परफॉर्मेंस मेजर नहीं कर सकते हो. मतलब डेली कर सकते हो बट देन मार्केट आवर्स में द वैल्यू डजंट चेंज बिकॉज म्यूचुअल फंड्स का एनएवी इज ऑलवेज टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मार्केट वैल्यू, व्हिच इज ओके. I am not promoting a short term mentality, short term trading, but the thing is transparency is there and control is also there, right? You have the control, you are seeing which stock you hold. Advisory led multi asset portfolio, so it's not like you only equities will be there. There are few portfolios where different assets are there. और कौन से assets होते हैं? Alternative investment में सबसे ज्यादा gold, debt, that is fixed income. So these counterparts exist in mutual fund as well, but obviously these are created through ETFs which are again traded on the market. एक राइट पे एक स्नैपशॉट लिया है फार्मा बास्केट का. अभी क्या है कि देयर आर मल्टीपल वेल्थ बास्केट्स अवेलेबल ऑन पेटीएम मनी. एज वी स्पीक देयर आर अ टोटल ऑफ 14 ऑफ देम. अभी 14 ज्यादा नहीं है बिकॉज दैट इज ऑल क्लासिफाइड एज पर योर थीम. आपको 14 के 14 तो नहीं लेने, but then you understand yourself and this is the topic for today, that how do you understand yourself कि आपके लिए कौन सी wealth basket best रहेगी to create your wealth, to do the asset allocation. So that is what we are going to discuss today. यहाँ पे pharma का एक snapshot दिया है, 1 year comparison, थोड़ा old है, don't go on the numbers, but we give all the basically all the details over there to make you take the best wealth baskets available for you. This I have already actually covered in the last 5 minutes when I was speaking. But look at the point number 2. These come in clear themes, strategies, and goals. This is what I want to focus now. How do you create wealth using your different goals, different strategies, and different themes के ऊपर wealth baskets हैं. कौन सी लेनी है, कब लेनी है, कैसे लेनी है, डिस्कस करते हैं. ये मैंने ऑलरेडी थोड़ा सा डिफरेंस बताया बिटवीन म्यूचुअल फंड्स एंड वेल्थ बास्केट. पीएमएस एआईएफ many might not be even knowing कि वो क्या होता है, तो I'll just give a brief snapshot. But mutual fund and wealth basket के बीच का difference you understand, right? So transparency is there as I already explained you. Customization is there. So customization basically आज आपको अगर specialty chemicals का wealth basket लेना है आपको मिलेगा, mutual fund में नहीं मिलेगा. Process orientation, low cost of distribution, product side innovation. So all these things are there in the wealth basket, which obviously lacks in mutual funds. And I'm not saying that mutual funds are bad. I mean, I've been doing mutual funds for past 10 years myself now, more than 10 years, and pretty happy. But then तब तक वेल्थ बास्केट्स नहीं थे. अभी वेल्थ बास्केट्स हैं तो धीरे धीरे वी हैव टू मूव द मनी टू बेटर एवेन्यूज, एंड यू नीड टू जज बाय योरसेल्फ आपके लिए बेटर क्या है. एंड वो थोड़ा सा मैं हेल्प करूंगा आपको जानने के लिए. एंड इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू विल से वेल्थ बास्केट्स ही बेटर है, म्यूचुअल फंड्स भी बेटर हो सकता है. दैट इज योर कॉल. ओके, asset allocation with your wealth basket. This is what I was discussing. Wealth baskets for core portfolio, wealth baskets for satellite portfolio. भाई ये core and satellite क्या है? अच्छा, this is a very interesting concept. And today I thought I'll take 3-4 minutes, 5 minutes to explain you core और satellite का मतलब क्या होता है. आपका एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो होता है which you will keep for years and years, decades. मेरा एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है जो मैंने सोच लिया मैं उसमें कोई से स्टॉक या कोई से म्यूचुअल फंड्स कभी नहीं बेचने वाला. आई जस्ट कीप ऑन एडिंग इट. जब जब डिप आ रहा है तब तब ऐड करते जाओ, जब तक नहीं भी आ रहा है बस एसआईपी कर लो. बिकॉज दिस इज समथिंग, लेट्स से फॉर माय रिटायरमेंट आज से मे बी 25-30 साल बाद, या फॉर माय किड्स एजुकेशन, किड्स वेडिंग, व्हिच इज लाइक लॉन्ग टर्म, लाइक 25-30 साल लगेंगे उसमें. आप इससे आप डेली का डेली यू कैन नॉट काइंड ऑफ ट्रिकल देम कि आज अरे आज मार्केट 5% गिर गया चलो बेच देते हैं, ऐसा नहीं होगा.
So you need to be very specific as to where are you putting money if your time horizon is a very very long term and this is your core portfolio. तो एक core बनता है जिसमें आपका रिटर्न्स तो अच्छे बनेंगे, बिकॉज लॉन्ग टर्म में जैसे मैंने बोला कि लॉन्ग टर्म में स्ट्रेट लाइन है, बट शॉर्ट टर्म में वो ऐसे मूवमेंट होता रहेगा zigzag zigzag. तो जस्ट फॉर योर पोर्टफोलियो जस्ट फोकस ऑन दैट स्ट्रेट लाइन. पैसा बढ़ेगा, आज कहाँ है कल कहाँ है इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. लेकिन जब वो zigzag चल रहा है तो नीचे वाले पॉइंट पे उठा के ऊपर वाले बेचने में रिटर्न बन रहा है शॉर्ट टर्म में, तो व्हाई वोंट यू मेक इट? यू वांट टू कैप्चर ऑल दिस शॉर्ट टर्म मूवमेंट, राइट? सो उसके लिए बोलते हैं सैटेलाइट पोर्टफोलियो ना. सैटेलाइट पोर्टफोलियो का मतलब ये है कि आपको जिंदगी भर नहीं रखना है इसको. आज आप रखो, पैसा बनाओ, एग्जिट करो. आज आप उठाओ, पैसा बनाओ, एग्जिट करो. Now these are very few, kind of, as I told you in the initial part of the session, कि कोई ना कोई सेक्टर तो जरूर चल रहा होता है कभी ना कभी. सारे सेक्टर एक साथ घुस जाए फॉर अ prolonged period of time, ऐसा it's very very difficult to say. Oh, very very difficult. In that scenario, for that kind of a portfolio, satellite portfolio, there are few baskets which are very focused on certain sectors. अभी जैसे wealth baskets are available for the specialty chemicals or basically chemical sector as a whole. तो chemicals momentum नाम है उसका. एक pharma का आपको दिखाया मैंने, एक banking and financial services है, एक थीम के ऊपर कंजम्पशन थीम है. ठीक है, कंजम्पशन थीम तो हमेशा चलती है, राइट? मार्केट थोड़ा सा डिफेंसिव सेक्टर है. व्हाट डू आई मीन बाय डिफेंसिव सेक्टर? मार्केट अगर गिर रहा है तो ये सेक्टर थोड़ा सा डिफेंड करे, मतलब आई मीन ये सेक्टर थोड़ा बेटर परफॉर्म करेगा. 2020 मार्च में जब एंटायर मार्केट वाज फॉलिंग बाय लाइक 30-40-50%, देयर वर स्टॉक्स लाइक HUL एंड ऑल फार्मा, ऑल FMCG स्टॉक, बेसिकली कंजम्पशन ड्रिवन स्टॉक, जो गिरे बट इतना नहीं गिरे. सो दे प्रोवाइड अ काइंड ऑफ तो ये कंजम्पशन वेल्थ बास्केट है. एंड ये स्टॉक्स हमेशा धीरे 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 ग्रेजुअली बढ़ते रहेंगे, बिकॉज इंडिया में मार्केट इंक्रीज हो रहा है. इंडिया में डिस्पोजेबल इनकम लोगों की बढ़ रही है, सैलरीड क्लास इज इंक्रीजिंग, पीपल आर मूविंग फ्रॉम लोअर मिडिल क्लास टू और लोअर क्लास, पुअर क्लास टू मिडिल क्लास. तो ये सब होने के चक्कर में क्या हो रहा है कि कंजम्पशन पावर लोगों की is increasing. And when this increases, then obviously the stock prices of all these companies which are selling the consumer goods will increase. एक बास्केट है जिस which is basically there are a couple of more sectoral baskets which we will be coming up in the next couple of weeks. So those are also focused on certain sectors. There is one called Make in India. Make in India is focused on that Atmanirbhar वाला जो government का scheme था. Basically this basket holds companies in the industrial sector. अभी इंडस्ट्रियल सेक्टर बूम कर रहा है, राइट? कैपेसिटी एक्सपेंशन, this and that. So we have been seeing for the last 6 to 8 months, 10 months ये increase कर रहा है. Digital India, the best one. IT तो इंक्रीज करेगा ना. अभी 250% एनालिटिक्स की कंपनीज ओपन होती है आईपीओ में, राइट? 120-130 पी पे ट्रेड होती है, irrespective of whatever is happening in the market. But the idea is that IT theme is going to grow. ये तो कंफर्म्ड है ग्लोबली, नॉट ओनली इंडिया. तो दिस डिजिटल इंडिया वेल्थ बास्केट इज फोकस्ड ऑन द IT. ये तो मैं कह रहा हूँ कोर के लिए भी रख लोगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. Then there is a basket called MNC growth. इसमें most of the companies are there which do their business worldwide. तो उनका अलग ही एक characteristic होता है. They also the prices are also driven by what is happening in the other regions. Nestle company हो गई MNC में, right? You know how things are working over there. A lot of companies like Colgate, Palmolive. I don't know whether these companies are in the baskets or not. I'm not saying that. I'm just giving you a few examples. तो ये सब आपके हो गए सैटेलाइट पोर्टफोलियो के लिए. अभी आपको लग रहा है आज केमिकल्स अच्छा चल रहा है, केमिकल्स में जाओ. 6 महीने बाद अगर आपको लगे केमिकल्स इज गोइंग डाउन, यू सेल इट एंड मूव इट टू फार्मा. यू विल से कि मुझे कैसे पता चलेगा कि केमिकल्स खत्म हो गया, फार्मा में मूव करना है. तो ग्रेजुअली द आइडिया इज दैट वंस यू हैव टेकन दीज वेल्थ बास्केट्स, gradually we will start putting up some kind of blogs or understanding, because ये तो कोई नहीं बोल सकता कि आज आप इसको, I mean this is something that through the nudges only you will understand that okay, now the fund manager, the SEBI registered professional is thinking that okay, it's time to kind of exit this, enter into another one. This is under this is WIP, work in progress. It will come soon, and once this comes, then it would be great, because you always say कि यार अच्छा प्रॉफिट बन रहा था, 2 महीने में 20% अप था, अगले 2 महीने में वापस में जीरो पे आ गया, क्या फायदा होगा? तो all these things are we are working on this. तो ये चीज आई होप समझ में आई. कोर एंड सैटेलाइट क्या था. आफ्टर आई स्टॉप स्पीकिंग, आई सी द क्वेश्चंस. इफ यू गाइस हैव रेलेवेंट क्वेश्चंस, कीप पुटिंग देम. वेरी हैप्पी टू kind of make you understand in more detail. Now
I think this is the last slide. Wealth baskets is wealth creation for your asset allocation. So basically, I have explained you core और satellite. थोड़े satellite के तो ideas मैंने दे दिए आप लोगों को. कोर के कुछ आइडियाज क्या है, जो नीचे जो चार बास्केट्स के जो स्नैपशॉट्स हैं. सो जायंट्स ऑफ इंडिया गोल्ड डेट इक्विटी, ये आपको फ्री है. इसमें कोई सब्सक्रिप्शन प्लान नहीं लेना पड़ेगा. यू गो टू पेटीएम मनी ऐप, गो टू वेल्थ बास्केट्स, वहां पे यू विल बी गेटिंग दीज जायंट्स ऑफ इंडियन गोल्ड डेट इक्विटी एट अ फ्री कॉस्ट, बिकॉज the fund advisor, the SEBI registered professional thinks and WealthDesk thinks, Paytm money thinks that इतना तो asset allocation, kind of wealth creation, we should always without anything in return, we should help people to get this. अभी इसमें है क्या? Gold debt equity में obviously as the name suggests, X percentage of gold, Y percentage of debt, Z% of equity. कितना कितना है वो you will see on the app, then you will get to know. And आप इसको SIP करो, क्योंकि बढ़ना तो सब है. इवेंचुअली डेट धीरे धीरे बढ़ता है, इक्विटी का तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू. एंड गोल्ड का कैरेक्टरिस्टिक इज दैट, गोल्ड का कैरेक्टरिस्टिक सबको पता है. आई मीन वंस इट इंक्रीजेस due to some macro factors very aggressively, otherwise in some days it is lackluster, but you need to have that in your portfolio to hedge your risk basically. Giants of India has the equity exposure across the top 250 companies in certain proportion, right? And through ETFs. So you can start with as low as 1,000 rupees in both Giants of India and Gold at Equity. 1,000 se start karo, and you can increase your amount coming back, adding as a lump sum or doing an SIP, whatever. But do start. Now, Evergreen Multi-Asset Conservative and Evergreen Multi-Asset Moderate come into the our core plan, which is you have to pay a subscription plan for it. बट दिस पोर्टफोलियो है क्या, इसमें थोड़ी सी और चीजें ऐड हो जाती हैं. इसमें आपका इंटरनेशनल इक्विटीज भी ऐड हो रहा है. इसके परसेंटेजेस फॉर निफ्टी एंड फॉर गोल्ड एंड निफ्टी जूनियर मतलब 51 to 100 कंपनीज, निफ्टी मिड कैप, इसके वेटेजेस अलग अलग है. इफ यू थिंक यू आर अ कंजर्वेटिव पर्सन, यू कांट टेक मच रिस्क, यू कांट अपना वो वॉलेटिलिटी नहीं वो सफर कर पाओगे, तो then you should go for an evergreen multi-asset conservative, because it has more weightage towards assets like debt and gold. But if you think you can take a little bit of risk, then moderate. If you have a long-term plan, and if you know, I can't generalize आपको क्या लेना चाहिए. You have to think about yourself, because अगर मैं इस टॉपिक पे बोलूंगा तो इसके लिए मुझे एक और पूरा सेशन चाहिए होगा. वो हम कर लेंगे कि आप कैसे सोच सकते हो कि आप किस टाइप के रिस्क प्रोफाइल, रिस्क टेकिंग पर्सन हो. That we can do in one of the sessions. But for now, I would just say that understand your time horizon. If it is 20 years, 15 years, then evergreen multi-asset moderate is great for you, because you can withhold that. You can kind of वो जो movements आ रहे हैं volatility के, you can withstand that, right? So this is just my suggestion. I'm not saying that यही लेना है, but you have to think about your portfolio creation. Core plus satellite. कोर को आप लॉन्ग टर्म के लिए रखो, मत बेचो, ऐड करते जाओ. सैटेलाइट को यू टेक फॉर शॉर्ट टर्म kind of profit making opportunities. Not everybody should do satellite, because you need to be a little active on the platform, because आपको हर चीज को करने के लिए पेटीएम मनी ऐप पे तो आना ही पड़ेगा. अगर आपको लगता है इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मुझे नहीं आना, आई एम हैप्पी विद टेकिंग अ लिटिल लेसर रिटर्न्स, then core portfolio is what you definitely need to build. So here I will stop and start taking some questions, and if you have just a second, let me just stop sharing my screen and go to the Q&A. Okay, लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा शेयर खरीदे? शेयर तो यहाँ तो पूरा फोकस ही मेरा पोर्टफोलियो बनाने पे है ना. यू आर आस्किंग फॉर शेयर्स, doesn't make sense, right? So my idea is to make a portfolio for yourself, not making a specific share, because आज मैं आपको शेयर बता भी दूंगा ना, then you are not going to come back to me to ask कि वैभव ने बताया था वो शेयर लेने को, कब एग्जिट करना है. 10 साल बाद वैभव का है या कौन का है क्या पता, शेयर तो वही की वही है. You should build a portfolio for yourself rather than asking individual guys anyways. Okay. Monthly invest on WealthBasket is good for long term, like 1-2 year. Of course, I would see my belief is that जितना इक्विटी इन्वेस्टमेंट स्टैगर कर सकते हो उतना बेटर है. बिकॉज इक्विटी इन्वेस्टमेंट क्या है कि एज आई टोल्ड यू, इट इज गोइंग अप एंड डाउन, सो यू नेवर नो कि व्हेन इज द राइट टाइम. 18,000 लेवल्स कैन आल्सो बी अ राइट टाइम. वेटिंग फॉर अ करेक्शन कैन आल्सो बी अ राइट टाइम. 18,000 पे नहीं लिया, वेट करेक्शन पे वेट करते रहे, 19,000 हो गया, तो यू विल से कि मिस कर दिया. तो इससे तो बेटर है कि आप हर मंथ की कोई एक पर्टिकुलर डेट को
डालते रहो पैसा, या हर वीक में एक बार बार ऐप पे आके पैसा डालते रहो. एवरी मंडे यू पुट इन some amount. Weekly SIPs is currently not available. Monthly SIPs we are working on, and but अगर आपको आके लमसम में ऐड करना है तो you can keep doing that. Always stagger your equity investment is what I'm saying. What is the extra edge we get from other vendors if we subscribe? We get from other vendors if subscribe through Paytm. I didn't get that question. Vaibhav, if you can just try explaining what is the extra edge we get from other vendors. So see, basically what I can understand over here is that if you are saying other vendors, that would mean SEBI registered professionals. Extra edge, I would say, let's say in comparison with mutual fund managers, is that these guys have demonstrated a good performance over the period, and obviously look at their recent history, their performance, and then decide your way forward whether you want to invest or not. What WealthDesk and Paytm Money is doing, that we are ourselves doing that due diligence, that how is this SEBI registered professional has demonstrated his capabilities over last many years. Once we are comfortable at our end that okay, this is the guy who can kind of help make you money, help make you create wealth, and then only we bring him on the platform, so that you can probably be assured of. When will more wealth baskets be added? I think somewhere around first or second week of December is what I'm told. But see, I'm not committing anything because this is up to the professional Contact Capital. But he also launches new wealth basket when he sees that there is an opportunity in the market, right? अभी मार्केट अगर नीचे जा रहा है तो या फिर कोई सेक्टर ऐसा जा रहा है जब जिसका कोई अभी फोकस ही आई मीन इट्स नॉट रनिंग, मोमेंटम बिल्ड नहीं है, तो देन देयर इज नो पॉइंट ऑफ लॉन्चिंग इट आल्सो. So we launch it when he will launch it when he thinks there is the right time, and so you'll get an update about it. I invested 1,000 on Giants of India. Let's know what exactly happened. I am a beginner. So Giants of India, if you have invested, you can go on the platform, look at your dashboard. If you had invested, let's say 15 days back, you would be seeing some other value than 1,000, because it would have, hopefully it would have increased. Giants of India is equity. Equity market has actually, if I remember correctly, it has corrected since 19th October, and it is moving in a certain consolidation zone. It is consolidating. It's not like whatever was happening from 8,000 to 18,000. So थोड़ा consolidation आया है अगर पिछले एक महीने में लिया होगा तो, but stick around it. Equity markets हैं इंडिया में, तो equity markets ऊपर ही जाने वाले हैं, and you have chosen a good product for your core portfolio. What I can say. I was wondering if the timeline of your subscriptions are aligned with the timeline you expect to give best returns to customers. ऐसा कुछ नहीं है. ऐसा करेंगे तो then ये बहुत ही short term momentary portfolio हो जाएगा ना. Whenever you think it's good, whenever you hear about this app or these wealth baskets, you come to the platform, put in money. Long run में everybody will make money. ठीक है, there might be a point, some difference between someone who might have invested at the low and tomorrow if you come and invest at a little high. But long run में सब बराबर हो जाना. You cannot get in the best bottom and the best top. I mean exact bottom exact top तो किसी को नहीं पता है. जिसने बॉटम पे भी लिया होगा उसको भी नहीं पता होगा कि मार्केट कल से ऊपर जाने वाला है, मैंने बॉटम पे ले लिया. करेक्ट. I mean till probably 1 or 2 months from that date. So we don't time it. You come platform पे, baskets are always available. Whenever you are comfortable, just invest into it. I am a subscriber of WealthDesk. I have 5 baskets. Unfortunately, the return of all baskets are lower than their benchmark reference. Basically, the idea is not, so benchmark is there, but these portfolios are created on the quant based or the momentum based theory, right? Now Nifty 500, if I'm assuming that's the basket you might be talking about. If Nifty 500 has certain, that's a benchmark containing 500 stock, but the SEBI registered advisor, the professional has chosen 10 stocks based on certain algorithms. If you are saying that you have subscribed for 5 wealth baskets, we started with Paytm Money in September. So अभी अगर आपने खुलते भी ले लिया होगा तो 2 महीना हुआ नहीं है. So I would not say कि 2 महीने में you should start judging whether the portfolios are performing well or not. At least give the professional 6 months. 6 months में आपका अगर अंडर परफॉर्मेंस होता है तो then we'll speak about it. Otherwise, just hang on. No? Just hang on, because ultimately the portfolios have done remarkably well over the last corrections, consolidations and all. अभी पिछले एक महीने से मार्केट ही डाउन है तो थोड़ा बहुत तो the pain will be there, but long run के लिए portfolios are eventually beautiful. For example, digital basket by open Q is lower than IT Nifty. Okay, and I am already in for 4 to 6 months. 4 to 6 months.
of my validity of subscription. My worry is now that I should subscribe. So first of all, I don't know with how you are saying 4 to 6 months already done, because it has only been 2 months. Maybe you had got an early access before that. But idea is, I don't know the individual constituents of Digital India Wealth Basket, and why is it not performing well. But mostly what I know from when I spoke with a professional is that mostly the focus is on the mid cap IT stocks, and mid cap IT stocks might be like Infosys, Persistent, and all. Probably they are in a consolidation zone. Otherwise, stick, as I said, stick to the process. I mean, just whenever he says rebalance it, because he sees, because this is a momentum driven portfolio, right? If momentum is sizzling out of a stock, then that stock will go out and new stock will come in. So eventually, on the long run, you will be making expected to make a little, kind of beat the benchmark over the long, because the history says so. I mean, you can go to openq.in website, and there are beautiful charts where he shows that if you are sticking to his portfolios for over 1 year, or I think 2 years, you are never making losses, and most likely you will be beating the benchmark. Once scripts credited to demat account, post that we can sell or average the scripts based on investors flexibility. Do we have that control? See, if you do that manually, no, then there will be a problem. Why there will be a problem? Because you sell something manually from your account. Tomorrow, if a rebalancing notification comes and you don't have that stock, then it's going to be some errors which will be keep, kind of, you will be keep seeing in your Wealth Basket app. So don't do this. Just don't do this manually, because you have already paid for some kind of advice or some service from the SEBI registered professional. Stick to that and then compare the performance. No, कि मैंने तो आपका पूरा follow किया, but still I'm not making money. Then probably you can come and say, now if you do this on your own, आपने बेच दिया और वो ऊपर भाग गया, then you can't come and say that okay, the portfolios have not performed well, right? So keep all these things in mind, and I would just say that be there for the long term. Even for satellite portfolios, at least give 6 months. Core portfolio के लिए तो, as I told you, decadal investment है आपके लिए. I would just like close by saying that you should completely, kind of see, there are asset allocation approach. There are different asset classes: equity, debt, gold are the primary ones. Obviously, there is real estate and a lot of other things which currently we do not have. And physical real estate, anyways, is a different beast altogether. But you create your wealth, you make your asset allocation using different wealth baskets. और कब किसकी क्या लेनी है, वो मैं इस हर वेडनेसडे को आके आपको थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया दे सकता हूँ. Last question I have is, any subscription for free? Yes, as I told you, there are 3 wealth baskets which are free for you to take. One is Gold Debt Equity, one is Giants of India, and the third one which we have recently launched is Diwali Wealth Basket. So Diwali Wealth Baskets, there are I think 7 or 8 stocks. This is meant to be kept for at least till next Diwali. You can still take it, because market has been in the same range as it was during Muhurat trading day. You have not lost much. Probably you can look to get that as well. एक और क्वेश्चन आ गया है, सब्सक्राइब बट वांट टू नो टिल माय सब्सक्रिप्शन आई कैन इन्वेस्ट और आफ्टरवर्ड्स आल्सो. सो टिल you can invest afterwards also, but then basically the, so let's say your subscription is for 3 months. So you have taken a subscription on, let's say today 17 November, it will exist till 17th February. Till 17th February you will keep kind of seeing the portfolio weightages, कौन से stocks आ रहे हैं, rebalancing request. उसके बाद rebalancing request आनी बंद हो जाएगी आपको, because you have not taken that subscription. So you will keep holding those stocks which you were holding as on 16th or 17th February. उसके बाद आप अपने मालिक हो, because you have decided to take things in your hand. So you can stop paying the subscription fee. You should not renew it, but then it's up to you when are you selling the existing stocks or buying the new ones. अच्छा, एक और स्टॉक वो आ गया है, वो क्वेश्चंस, मोर क्वेश्चंस आर कमिंग अप. ओके, ग्रेट. Morgan Stanley forecasted that Sensex will cross 1 lakh in 2025. What are your views about the market? Okay, although not a right forum, but one of my favorite topics, so I'll give a brief one-liner. Sensex 60,000 तो चल ही रहा होगा, 61,000. 2025 में we have, let's say end of 2025, we have 4 more years left. That means 66% in 4 years. अगर आप इसको स्ट्रेट लाइन बेसिस से देखते हो तो ये करीबन कुछ 16-17% आता है. कंपाउंड कर दोगे 15-16% आता है. करेक्ट. 15-16% फॉर नेक्स्ट 4 years कंसिस्टेंटली, और मे बी 1 year में कुछ 50% दे दिया एंड देन इट करेक्ट्स डाउन. आई वुड से इट्स नॉट इम्पॉसिबल,
but consistently giving a 16% CAGR over only 4-year period of Sensex. Now, Sensex is based out basically comprising of the top 30 companies. जो टॉप 30 कंपनीज है ना, उनका बेस इतना ज्यादा होता है कि उनका 16-17% बनाना ईयरली बहुत मुश्किल है. Small cap में maybe you can make 16-18%. Generally, I take that assumption कि over the long period, over the cycle, 7-year cycle, business cycle, you might make 15-16-17% in small cap stocks. But Sensex making 15-16-17% company is a little difficult, but possible. However, there are a lot of events going forward from 21 and to 25. अभी यूपी इलेक्शन आने वाला है, फिर मेजर 24 में इलेक्शन आएगा. बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं यार कब क्या हो रहा है. Targets देते हैं organizations, but they revise targets also depending upon how things are going on. So please stick to the process, keep yourself invested into equities, because one thing I am very sure about and I've been speaking for a long time is अगले 10 साल is India's. You definitely need to be investing. अगर आप 10 साल के पर्सपेक्टिव से इन्वेस्ट कर रहे हो तो आज अगर 18,000 पे कर रहे हो या 17,500 के लिए वेट करते रह जाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा 10 साल बाद. आई डोंट इवन रिमेंबर जब मैंने फर्स्ट इन्वेस्टमेंट 2010-11 में किया था तब निफ्टी की वैल्यू क्या थी. क्या फर्क पड़ता है. डू आई हैव टू टेक सब्सक्रिप्शन एवरी टाइम आई व्हेनेवर आई परचेज वेल्थ बास्केट? नहीं, सब्सक्रिप्शन एक ही बार है. यू जस्ट टेक अ सब्सक्रिप्शन. लेट्स से 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लिया, एक बार सब्सक्रिप्शन ले लिया, उसके बाद 12 मंथ्स तक एवरीथिंग इज फ्री फॉर यू. देयर इज नो एडिशनल कॉस्ट. ऐसा नहीं ये फार्मा वेल्थ बास्केट ले रहे हैं तो उसके लिए अलग, डिजिटल के लिए अलग, ऐसा कुछ नहीं है. एक बार सब्सक्रिप्शन प्लान ले लिया तो करंटली यू हैव 14 वेल्थ बास्केट एंड लेट्स से यू हैव टेकन प्रो, सबसे बड़ा वाला सब्सक्रिप्शन पैकेज फॉर 12 मंथ्स. उसके अंदर जो भी आ रहा है आपको, तो आज प्रो में सब कुछ है, राइट. So whatever basket will be added in core will be available for pro, whatever will be added in free will be available for pro. आगे अगर हम 10 बास्केट्स और ऐड करते हैं अगले एक साल में आपके सब्सक्रिप्शन प्लान तक, तो वो भी आपके लिए फ्री होगा. इस प्लान के अंदर आपका जो भी कॉस्ट एक्स्ट्रा लगेगा दैट इज गोइंग टू बी योर टैक्सेस एंड ट्रांजैक्शन चार्जेस. एंड पेटीएम मनी पे तो ब्रोकरेज भी जीरो है. सो वो आपका बस वो स्टैम्प ड्यूटी एंड एसटीटी एंड ऑल दोस थिंग्स विल बी देयर, depository charges. So I'm not getting any more questions right now, so I think I can stop here. If you have anything else, probably I can wait for 10-15 more seconds, and then I'll see you next week with a different topic, with a more focused topic on maybe one of the best baskets. You can look at the topic on the Paytm Money PWC community app or section basically. ठीक है, I think we can wrap this up. Good to have you guys today again, and see you next week. Bye bye.